Hello, Gaurav ji, on time, always. Hi Richa, how are you? Welcome. किसी ने काम किया है कल के एक्सरसाइज पे? मैंने तो हाँ? मैंने तो नहीं किया है। आप अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो किस सेंटर से आपकी आइडेंटिटी आती है? हाँ, कर सकते हैं आई थिंक। सो मैंने फिगर आउट किया कि मेरा जो है ना, जितनी भी आइडेंटिटी आ रही है वो मेरे खुद के से आ रही है. हम्म So how does that work is, like, if I'm working, I'm happy. If I'm in integrity, I'm happy. हम्म Um, um, if I am giving, I'm happy. But then if I am centered to I, which हम्म is me in the relationship, so I'm always the giving. I'm not able to receive. So my centeredness towards me giving, me being efficient, Richa being a certain way, limits me so much. So if someone doesn't like me, मेरी energy बहुत नीचे चल जाती है. If someone doesn't perceive me in a certain way, मेरी energy बहुत नीचे चल जाती है. Because it's always about Richa being perfect. Yeah, Richa being on her toes, working, being out there, being the whatever is needed to be done. And if somehow I feel short of being on my toes, then I am like in a very negative state. I'm like, I'm done. मतलब I can't afford to do a single mistake. If I do a mistake, मेरी power बहुत कम हो जाती है. I feel like a failure and good for nothing and this and that. So मेरी मेरी जो source of power है वो मेरा खुद खुद से self centeredness से आ रहा था बहुत ज्यादा. So in all relationship it is about कि मैं अपना fully दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ, right? But now, if I take it to be principle centered, which is being compassionate and empathy, I can be compassionate to my own self and I can be compassionate to the other person, and I will be able to delegate. I will be able to receive, even receive love, and receive help and receive support. So मैं support ही नहीं लेती, because it's all about richa doing. It's all about my identity. Richa being a certain way. तो वो मेरे लिए बहुत लिमिट कर रहा था मेरी आइडेंटिटी को, मतलब मेरी प्रोग्रेस को और मेरे रिलेशनशिप्स को, which I also shared in my advanced manifestation class, that because I feel left out or abandoned, मैं इतना I centered हो गई हूँ कि I don't give a chance कि someone can hurt me or harm me, because मैं वो but maybe allowance ही नहीं other person को to show up in my life. but Richa, it is so difficult to see कि your life is centered. Is it is a mixture of everything. It is work, it is family, it is इट money. इज, बट आप देखो ना डोमिनेंट कौन सा है. अभी तो अपन को थोड़ा डोमिनेंट देखना है, क्योंकि अपन तो पूरा ही सेंटर शिफ्ट कर देंगे प्रिंसिपल बेस्ड पे. अपन इन स्पाउस से, फैमिली से, इन सब से आइडेंटिटी ड्रॉ नहीं करेंगे आगे. सो आज अपन को यही करना, अपना अपन पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे. Okay, सो अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको ये लिमिट कैसे कर रहा है आपकी लाइफ में. लिमिट कैसे कर रहा है लाइफ में? ओके। ऐसा नहीं है आपको पावर नहीं दे रहा होगा, आपको सक्सेस हम्म दे रहा होगा, पर ये आपको लिमिट नहीं हम्म कर रहा होगा. तो अपन को हम्म देखो कि लिमिट कैसे कर रहा है, बिकॉज वंस वी सी कि अपन को लिमिट कर रहा है, देन वी विल बी एबल हम्म टू चूज अ better way of drawing our identity from a better way where we can get our maps of looking at things. And जैसे अभी मैं हूँ, अभी जैसे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज बहुत सारे कर लूंगी. क्यों? क्योंकि इट्स हम्म अबाउट रिचा बीइंग अ सर्टेन वे, राइट? तो मैं बोल बहुत लूंगी, मुझे सुनने में इशू आएगा, क्योंकि इट्स हम्म ऑल अबाउट आई. हम्म ओके। तो
तो वो लिमिटेशन देखो आपको किस तरह से लिमिट कर रहा है आपका सेंटर, जिससे आप आइडेंटिटी ड्रॉ कर रहे हो, जिससे आप सिक्योरिटी सेल्फ सेंटर्डनेस ड्रॉ कर रहे हो, जिससे आप गाइडेंस ड्रॉ कर रहे हो, विजडम ड्रॉ कर रहे हो, पावर डिसीजन मेकिंग आप किस बेसिस पे करते हो। सो डिसीजन मेकिंग में सारी खुद की कैपेबिलिटी पे करती हूँ मोस्टली। हम्म मेरे अंदर था अरे मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, तो लेट्स जस्ट डू इट, हम्म हम्म राइट। हम्म तो उस तरह से यू हैव टू सी कि आप डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे करते हो। हेलो अनुष्का, वेलकम। Hi, Richa. सो कुड यू सी आप सिक्योरिटी विच इज गाइडेंस, विजडम एंड पावर, आप किस सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो अपनी लाइफ में? Yes, external people. पीपल, अदर पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली Yes, और फ्रेंड्स। friends, family, anyone in that close circle of हाँ influence. हाँ From it, I don't think I differentiate ki kaun friend hai, kaun family hai, like in that sense. हाँ, तो आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम उनके Hmm. परसेप्शन पे कि वो People. हाउ यू Yes. अनिश, एंड योर सोर्स ऑफ डायरेक्शन इज what they think of, how they think, Hmm. what will look Yes. good in their eyes. That was a big awareness. And then how do you see and be the world and life and situations? Hmm. And how do you make choices and decisions in your life? Are they based on their opinions and what you think that how they will think? Hmm. Yes. Is that always the consideration? Not always, but yes, there is a big amount So how which does should that not limit be. you? How does that limit your power? It's not the right decision for me, and yeah, it limits my power. um, I give my power to someone else's hand, right? How they feel, not how I feel. हम्म। नहीं तो आप ये देखो आपकी लाइफ में आप आपको क्या उससे हो रहा है, जैसे मेरे को पता है, अगर मैं जैसे इफ सो yesterday I got present that I am very self centered. मेरी Hmm. जितनी पावर आ रही है ना वो मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस से आ रही है, इन द सेंस कि अगर मैं केपेबल हूँ तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी, हाँ कर दूंगी और खुश हो जाऊंगी। इफ आई एम गिविंग आई एम वेरी हैप्पी, if people Hmm. perceive me well I am happy, if they perceive me in a मैं सेल्फ वैलिडेशन मांगती रहती हूँ, अगर मुझे कोई वैलिडेट नहीं करता तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। मैंने कल लिखा Hmm. तो था पूरा, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। yes तो yes मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में मेरी शेयरिंग क्या है कि अच्छा तो लगा कि ऐसा जैसे आंखें खुल जाती है, राइट। हम्म। तो वो हुआ। अभी वापस से देखो बट ढंग नाउ से, जैसे व्हाट मैं यू सेड, शेयर करती वी हूँ विल वापस, नाउ वर्क आई ऑन एम हाउ टू डिपेंडेंट चेंज ऑन इट। माई सेल्फ, मैं भी वापस रिक्रिएट करती हूँ खुद का, फिर मैं आपका क्रिएट करूंगी, फिर गौरव जी का करूंगी। सो आई एम डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, अब उससे मुझे गाइडेंस क्या मिलती है, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट, आई नीड टू डू दिस। तो मैं डेलीगेट नहीं कर पाती, मैं हम्म मेरे को रिलेशनशिप में एंजाइटी होती है, राइट। अब मुझे सिक्योरिटी क्या आती है, मेरे को सेल्फ वर्थ मेरे खुद से आती है। तो इफ आई एम सक्सेसफुल देन आई एम हैप्पी, इफ आई एम वर्किंग आई एम हैप्पी, इफ आई एम डूइंग नथिंग तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, आई कांट रिलैक्स। हम्म ठीक है ना। अगर पावर की बात करें तो अगर मेरे को किसी एरिया में स्किल और नॉलेज होती तो मुझे ठीक लगता है, किसी किसी भी चीज के बारे में मेरे पास स्किल और नॉलेज नहीं होती तो मुझे हेल्पलेसनेस फील होने लग जाती है। हम्म और मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ, यस, तो मेरे को स्ट्रेंथ भी मिलती है, मुझे विजडम मिलती है उससे, राइट। बट इफ आई एम विद पीपल हु आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट तो मुझे टाइम वेस्ट लगता है, मैं उनके साथ रह ही नहीं पाती, मुझे एंजाइटी हो जाती है वापस से। सो आई एम ऑल अबाउट बीइंग एफिशिएंट 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 ऑल द टाइम। एंड उससे हम्म क्या हो रहा है कि मुझे है ना पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, एक आराम, एक बीइंग चिल एंड बीइंग ओके, बीइंग नॉर्मल, वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती। तो आप उसी तरह से देखो, जो आप अगर अपनी पूरे गाइडेंस, सिक्योरिटी, विजडम और पावर अगर आपके पीपल के ऊपर बेस्ड है तो वो उसका आप पे क्या इम्पैक्ट है वो देखो, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली।
जब तक आप वो एक्सपीरियंस फॉर्म में देख नहीं पाओगे ना, आप प्रिंसिपल पे शिफ्ट नहीं हो पाओगे. You have to recognize, you just have to be aware of it. Yes, Do you want to agreed. say anything, Anushka? No, same thing कि जो मैंने पहले बोला था कि the awareness was amazing. Hmm. I felt like I always knew मैं कहीं तो lack कर रही हूँ, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है. I know I'm better, but there's somewhere that I'm lacking. And then after yesterday, it was like, अच्छा awareness तो हो गई है. अच्छा, Now the only thing is how to let go of that, right? You don't want yourself to be dependent. ठीक है. Emotionally, mentally dependent. I got it. Gaurav ji, do you want to say anything? नहीं, I don't. अच्छा, you are clear? Are you aware? How does it limit you? Your of look, center of security, guidance, power, and wisdom. नहीं, it is not very clear. तो खा ले माँ, तो अभी देख लो ना, मैं वही कह रही हूँ. खा आप लिया, क्रिएट नहीं कर खा पाओगे ले. वरना. 2 एंड मिनट लगेगी. इसको कैसे देखें ऋचा? तो अभी आप देखो कि आप सबसे पहले डिसीजन लेते हो तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो अपने दिमाग में. वर्क को देते हो, फैमिली को देते हो, रिलीजन को देते हो. किस तरह से आपके ठीक देखने है, का तरीका किस सेंटर से आ रहा है. ठीक है. देखो अभी किससे आ रहा है. My decision के लिए it is coming from the work and the family. These two are है the ना. main things. हाँ. हाँ. तो आप जब वर्क और फैमिली को कंसिडर करते हो तो आपका देखने का तरीका हमेशा वर्क कितना है या फैमिली के ओपिनियन से आता है, किससे आता है. फैमिली के ओपिनियन से तो नहीं आता है, बट यू नो व्हाट इज राइट फॉर द फैमिली और व्हाट इज राइट फॉर द वर्क, उसके बेस So पे is आएगा it ना based on डिसीजन. your so is your security founded on family acceptance and fulfilling family expectations? बाय सिक्योरिटी व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब अगर आपकी फैमिली की एक्सेप्टेंस होगी तो आपको ठीक लगता है, आप वो डिसीजन नहीं लोगे जहाँ पे फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं आएगी. No, that will depend on whether the decision is right or wrong. हाँ, तो If you're it is not a family right centered decision, then. I Understand, you're not family centered then. फैमिली सेंटर्ड तो वो होता है जैसे आपके बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल अच्छा है, पर आपकी हाँ, फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप फैमिली को प्रायोरिटी दोगे और उसको बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजोगे, जबकि वो राइट डिसीजन है. हाँ. तो आर यू फैमिली सेंटर्ड और नॉट. No, I am not family centered then. हाँ, then what are you spouse centered. No. Are your feelings of security based on the way your spouse treats you. If there is a deep disappointment result in the आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आपके स्पाउस से, तो आपको बहुत विड्रॉल और डिसअपॉइंटमेंट फील होता है. इज इट. हाँ, होता है. हाँ, तो मे बी यू आर नॉट फैमिली सेंटर्ड, यू आर स्पाउस सेंटर्ड. Your direction comes from your own needs and wants and from wants and needs of your spouse. Your decision making is criterion is limited to what you think is best for your marriage and your mate and your preferences and opinions of your spouse. Your life perspectives around things that may positively or negatively influence your spouse or your relationship. Your power to act is limited by weakness in your spouse or in yourself. Yes, to some extent. हाँ, तो ये आपको लिमिट कैसे करता है आप ये देखो. Okay. लिमिट इन द सेंस कि आप कभी कभी वो डिसीजंस नहीं ले पाते जो आप ले सकते हो. आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. हाँ, नहीं, you are right. You know, some things, whether the other person may not like it or may like it, कि उसको कैसा लगेगा. If she will not like it, then maybe कि the यू विल नॉट decision डू is इट not इवन right. विद द राइट थिंग. Yes. यस. तो वो लिमिटेशन देखो, अब आपको अपनी लाइफ में हाँ, को देखना पड़ेगा कि वो आपको कहाँ कहाँ लिमिट कर रहा है, या हाँ. आपकी सेंस ऑफ फीलिंग में आप जैसे कुछ उसको हो जाता है आपकी वाइफ को, तो आप कैसे विड्रॉन फील करते हो, डिसअपॉइंट हम्म, करते हो, या आपकी एनर्जी हम्म, कैसे कम हो जाती है जब जैसे कोई ना कोई ब्रेक डाउन होता है आपकी रिलेशनशिप में. हम्म.
और आपकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो जाता है जैसे आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन आता है उस रिलेशनशिप में। Right. तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो गए ना उस रिलेशनशिप में। Yes, yes, 100%. तो वो इमोशनल डिपेंडेंस आपको कैसे, आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपको बस वो देखना है। द बुक Okay. इज सेइंग इफ यू आर इमोशनली डिपेंडेंट or Hmm. mentally dependent on something, then you will Hmm. not be able to see the all perspectives of life, and you will not be able to play a game of interdependence Hmm. because you're dependent. Right. डिपेंडेंस का जो गेम होता है, Hmm. सोशल गेम जो होता है, जो वेलफेयर ऑफ ऑल होता है, वो जब भी खेल सकते हो जब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इंडिपेंडेंट हो। Hmm. ये कॉन्सेप्ट है बुक का। So at the moment, you just have to see how you are emotionally, mentally, physically, financially dependent on certain aspects of thing, Okay. such that ठीक you है. can't take decisions objectively. Okay. That's it. इतना ही देखना है। ठीक है. ठीक है, अब आगे Hmm. बढ़े। Yes. As we consider various ways of looking at a single event, is it any wonder that we have young lady, old lady perception problems in our interactions with each other? आप ये exercise याद है young lady, old lady की from the initial chapter? Yes. Yes. Can you see how fundamentally our centers affect us? Write down to your motivations, your daily decisions, your actions, your reactions, your interpretations of events is all dependent on your center of being. आप जहाँ से अपनी जिस सेंटर से आप अपनी पावर लेते हो, उस सेंटर पे आपका देखने का तरीका बेस्ड है। योर परसेप्शन इज बेस्ड ऑन दैट। अगर अगर आप स्पाउस बेस्ड हो तो आपका स्पाउस और आप किस तरह से चीजों को देखोगे, उस तरह से आप पूरी दुनिया जीते हो। अनिष्का, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली आपका जिस तरह से सोचती है, आपकी सोच भी वैसी है। मेरी मेरी 100% वही सोच है, वही देखने का तरीका है जो सिर्फ मेरा है, बिकॉज मैं दूसरों को देख ही नहीं पाती, बिकॉज आई एम सेल्फ सेंटर्ड। And if that center does not empower you as a proactive person, it becomes fundamental to your effectiveness to make necessary paradigm shift to create a center that will। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये सेंटर आपको लिमिट कर रहा है, जब आप ये देख पाओगे तब आप है ना नेसेसरी पैराडाइम शिफ्ट करोगे एंड वो सेंटर क्रिएट करोगे जो आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज करेगा। As a principle centered person, you try to stand apart from the emotion of the situation and from other factors that would act on you and evaluate all the options. तो अपन जैसे सेंटर ड्रिवन से प्रिंसिपल ड्रिवन हो जाते हैं, तो अपन है ना बहुत ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। आज अपन पर्सनल मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे ना, ये अपन ने यहाँ पे खत्म कर दिया। A principle centered person, you try to stand apart from the emotion of the situation and from other factors that would act on you and evaluate the options. You will try to come up with the best solution, taking all factors into consideration. Whether you go to concert or stay or work is really a small part of effective decision. You might make a small choice with number of other centers, but there are several important differences when you're coming from a principle centered paradigm. First, you are not being acted upon by other people and circumstances. जब आप सेंटर फोकस नहीं होगे स्पाउस पे, रिलेटिव से, फ्रेंड्स पे या मुझ पर, तो मैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले पाऊंगी, बहुत सारे अदर फैक्टर्स देख पाऊंगी जो मैं पहले नहीं देख पा रही थी। Second, you will know your decision is most effective because it is based on principles with predictable long-term results. Third, what you choose to do contributes to your ultimate values in your life. Fourth, you can communicate to your wife and your boss within the strong networks you have created in your interdependent relationship. Because you are independent, you can be effectively interdependent. You might decide to delegate what is delegable and come in early the next morning to do the rest. Finally, you will be comfortable about your decision.
Whatever you choose to do, you can focus on it and enjoy it. आप इमोशनली डिसीजन नहीं लोगे, आप इमोशनली बाउंड फील नहीं करोगे, यू विल फील फ्री with what decision you are taking. As a principle centered person, you see things differently, and because you see things differently, you think differently and you act differently. Because you have a high degree of security, guidance, wisdom and power that flows from a solid unchanging core, you have the foundation of a highly proactive and highly effective life. अब अपन बनाएंगे writing and using a personal mission statement. As we go deeply within ourselves, as we understand and realign our basic paradigm to bring them in harmony with correct principles, we create both an effective, empowering center and a clear lens through which we see the world. Frankel says we detect rather than invent our missions in life. ये बोल रहा है आप डिटेक्ट नहीं करते प्रिंसिपल्स को, you invent your missions in life. I like that choice of words. I think each of us has an internal monitor or sense, a consciousness that gives us awareness of our own uniqueness and our own singular contribution that we can make. Everyone has their own unique mission in life, which cannot be replaced or repeated. Everyone task is unique and specific opportunity to implement it. In seeking to give verbal expression to that uniqueness, we are again reminded to the fundamental importance of proactivity and of working within our circle of influence. To seek some abstract meaning to our lives out in our circle of concern is to abdicate our proactive responsibility. अपन पढ़ चुके हैं. Our meaning comes from within. Again, a man should not ask what the meaning of life is, but rather must recognize that it is he who is asked. In other words, each man is questioned by life, and he can only answer to life by answering for his own to life. He can only respond by being responsible. Personal responsibility, proactivity is fundamental to first creation. Returning to the computer metaphor, habit one says you are the programmer. Habit two says write the program. Until you accept the idea that you are responsible and you are the programmer, you won't really invest in writing your program. As a proactive people, you can begin to give expression to what we want to be and to do in our lives. We can write a personal mission statement, a personal constitution. A mission statement is not something you write overnight. It takes deep introspection, careful analysis, thoughtful expression, and often many rewrite to produce it in the final form. It may take several weeks, months before you are comfortable with it. Even then, you will want to review it regularly. But fundamentally, your mission statement becomes your constitution, your solid expression of visions and values. I recently finished reviewing my mission statement, which I do fairly regularly. Sitting on the edge of the bench alone at the end of this bicycle ride, I took my organization and hammered it out. It took several hours, but I have a clarity of organization commitment and sense of exhilaration and freedom. I find the process is as important as the product. Writing and reviewing a mission statement changes you because it forces you to think through your priorities deeply, carefully, and to align your behavior with your beliefs. You have a sense of mission about what you're trying to do and you're excited about it. Using your whole brain. Our self awareness empowers us to examine our own thoughts. It is particularly helpful in creating a personal mission statement because the two unique human endowments that enable us to practice habit two, imagination and conscience, are primary functions of the right side of the brain. Understand how to tap into the right brain capacity greatly increases our first creation ability. A great deal of research has been conducted for decades on what to be called brain dominance theory. The left hemisphere is the more logical and verbal one. The right hemisphere is more intuitive and creative one. Left deals with the words, right with the pictures, left uh, with parts of specifics. The right is whole and relationship between the parts. Left deals with analysis to break apart, and right with synthesis and put together. Left deals with sequential thinking, right with stimulation and holistic thinking. Left is time bound, right is time free.
Although people use both sides of the brain, one side or the other generally tends to be dominant in each individual. But people tend to stay in comfort zone of their dominant hemisphere and process every situation according to their right or left brain preference. In other words, Abraham Maslow says, he that is good with hammer tends to think everything is a nail. अगर आप right hemisphere से सोचने की आपकी आदत है तो आप सब कुछ logically देखोगे. अगर आप left से आदत है तो आप सब कुछ emotionally देखोगे. Right brain and left brain people tend to look at things in different ways. We live in primarily left brain dominant world where words and measurements and logic are enthroned, and more creative, intuitive, sensing, artistic aspect of nature is often subordinated. Many of us find it difficult to tap into our right brain capacity. Admittedly, this description is oversimplified, and as we become more aware of different capacities, we consciously use our minds to meet specific needs in more effective ways. Two ways to tap the right brain, which is imagination and visualize. If we use the brain dominance theory as a model, it becomes evident that the quality of our first creation is significantly impacted by our ability to use our creative right brain. The more we are able to draw upon our right brain capacity, the more fully we will be able to visualize, synthesize, transcend the time and present circumstances to project a holistic picture of what we want to do and to be in life. Expand perspective. Sometimes we are knocked out of our left brain environment and thought patterns into a right brain by unplanned experience. The death of a loved one, a severe illness, a financial setback, extreme adversity, etc. What's really important? Why I am doing what I am doing? These are the questions which we ask to activate the right brain. But if you're proactive, you don't have to wait for circumstances to happen to you to start thinking like that. There are a number of ways to do it through powers of imagination, visualization, visualizing your own funeral. We did at the beginning of this chapter. Write your own eulogy. Actually, write it out, be specific. So, what we are doing is you have to ask yourself, Gaurav, what do you want to do and be? What is it that you want your life to be about? You can visualize your 25th and then your 50th wedding anniversary. Have your spouse visualize this with you. Try to capture the essence of the family relationship you want to create throughout by day and day investment over a period of many years. Anishka, what do you want Anishka's life to be about? You can visualize your Mm. retirement from your present occupation. Same like magic. This is similar like magic now. Yes, yes, yes. What contributions, what achievements will you want to have made in your field? What plans will you have after retirement? Will you enter a second career? So it's more about getting connected with yourself and really asking what is it that you really want to create, if anything is possible. Expand your mind. Visualize in rich detail. Involve as many emotions and feelings as possible. Involve as many senses as you can. I've done similar visualizing exercises with some of the university classes. Assume you only have this one semester to live. Assume you have only 1 month to live. What do you want your life to be about? Things are suddenly placed in a different perspective. Values quickly surface before you weren't even recognized. आप जब सोचने लग जाओगे इस तरह से तो आपको अपनी वैल्यूज दिखने लग जाएंगे अपने आप. But Richa, in this, what you want in your 25th of anniversary or 50th of anniversary is quite going to be, quite normal, na, that you want your work life to be a successful one. You want the family to be happy. You गौरव जी, want, ये तो आपको डायरेक्शन दे रहा है. अब आप चूज करो आप किस तरह की आप मरने वाले हो 1-2 महीने में 6 महीने में. तो व्हाट डू यू वांट योर लाइफ टू बी अबाउट?
जब उस तरह से सोचना शुरू करोगे, विजुअलाइज करोगे, इमेजिन करोगे, उसको रियल बनाओगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिर देन यू कैन क्रिएट, यार मैं चाहता हूँ यार ये भी होए लाइफ में, ये भी होए, ये भी होए। But I when you agree to think that. in that, but Yeah. yeah, go on. So even if I think like that, I'm coming back to my same old centers. Because you That you is want people to love you mm, and like you not and think good of you. no, not love. I can say same accepted. Like that is, You want to be but accepted yeah, by them. validation, acceptance. Yeah, like how let's Hmm. say you want your validation from yourself, like that. So पहले it ये comes to the देखना same. कितना लिमिटेड है यार, ये कितना लिमिटेड है ये, मतलब आपको कितना कन्फाइन करता है। जब तक वो कन्फाइनमेंट फील नहीं करोगे ना, यू डोंट वांट टू लीव दैट। एनी विच वे, मुझे भी नहीं पता अभी मैं कैसे बनाऊंगी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। So let's see. There are a number of techniques using your imagination that can put you in touch with your values. But the net effect of everyone I have ever used is the same. When people seriously undertake to identify what really matters most to them in their lives, what they really want to be and to do, they become very reverent. They start to think in larger terms than today and tomorrow. Visualization and affirmation. Personal leadership is not a singular experience. It doesn't begin and end with writing personal mission statement. It is rather the ongoing process of keeping your vision and values before you and allowing your life to be congruent with most of the important things. And in that effort, your powerful right brain capacity can be great to help you on daily basis to integrate your personal mission statement into your life. Begin with the end in the mind. सो मैंने कल जब एक्सरसाइज की थी तो मुझे ये क्रिएट हुआ, यार आई डोंट वांट माय लाइफ टू बी अबाउट मी इन द सेंस दैट आई डोंट वांट टू ड्रॉ my power, my sense of self-worth from my identity. I am independent, my self-worth is independent. I created that. So what is important to me is feeling empowered no matter what. Even if I failed, I want to feel empowered. Even if people are not liking me, I want to feel empowered. So मैंने बनाया, मेरा फर्स्ट वैल्यू होगा being empowered. दूसरा being compassionate. Even if the other person is not nice to me, I will not judge that person. I want to be compassionate. Even I want to be compassionate to myself. If I'm not liked by people, it doesn't really matter to me. I want to be compassionate and I want to see from above. I want to be connected with the universe, that it's not about me, richa, richa, richa. Richa is not the whole life. I am successful or failure, doesn't matter. My business goes up or down, doesn't matter. I want to be independent. And what will be my intention? I will work in a way that is empowering. And I will not come from, अरे यार ये करना है shit, अरे यार ये करना है shit. Like I don't want to come from that pressure जो मैं खुद पे बनाती हूँ. मेरे को pressured way में नहीं जीना. तो मैं खुद से freedom चाहती हूँ. So I've created that I will be empowered no matter what. I'm doing things or I'm not doing things doesn't really define who I am. दूसरी value, being compassionate. I will be compassionate to myself and I will give myself freedom to be. अगर मैं किसी दिन 4 बजे नहीं उठ रही, that doesn't mean कि मैं तो गई काम से, मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता. लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाऊंगी मैं. So I want to be empowered, I want to be compassionate, I want to be kind, I want to listen to other people, I want to understand people of who they are. जैसे in my relationship with my husband, he's a very different human being, I'm a very different human being. मैं चाहती हूँ वो बोले बोले बोले, उसका नहीं मन बोलने का, उसका नहीं मन बोलने का. He's a silent man, he doesn't like to speak much. So it's not about what Richa wants. It's about what Meet also wants. He wants to be silent. He doesn't want to speak. He enjoys silence. Maybe I will enjoy silence with him. Maybe I don't want him to speak now because it's not about Richa's expectations. Are you understanding? Anishka, Gaurav ji. Yes, yes, yes. So I'm understanding. So, आप जिस सेंटर से आओगे हाँ, ना, उसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है. correct.
तो उस तो इसमें अभी लिमिटेशन जैसे आपने आप बोला अपनी था, वैल्यू से कनेक्ट कर पाओगे. यस, तो बोल रही थी जैसे अभी आपने बोला था कि so I'll say I want to see situations from above again, not from a singular person's perspective, but from हम्म. above. हम्म. Okay, then again I want to be free from other people's judgments because हाँ, I पर am taking अनुष्का that ये judgment. जजमेंट वो Now, करेगा. अब मैंने कल क्या क्रिएट किया? गिवन अनुष्का इज अ बैड पर्सन, अनुष्का इज नॉट hmm, लव्ड बाय पीपल. Do you want hmm, to be confined if for by hmm, chance everybody is thinking bad about you? Do you want to still feel bad because everybody is feeling bad about no, you? इसमें तो लिखा है No, ना, right? want to So be you free want from to other feel, people's judgment. Yeah, ha. What do you want yourself to be, Anushka? Ask yourself. wait, so Want that's to what I'm be- saying. So, what is your value that will define you? No matter what people think, good or bad, it will not affect you. What is it that is more honest, valuable to you in life? honesty. If, for Yes. example, I'm making a decision, if I am Yeah. honest to that situation, Hmm. मैं सही है, then I don't care Yes. अनुष्का क्या सोचती है, So दुनिया क्या that's सोचती है. that's the principle you have to cling on. लिख लो यहाँ पे. Honesty is one Hmm. principle. है ना? फिर I will not think कि अनुष्का को लोग अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं. मेरी principle है, मैं honest हूँ. अब I will not be limited by people perception of me. Honesty, So you transparency. so honesty is a principle that you will become principle centered then. Hmm. जैसे मेरा प्रिंसिपल सेंटर्ड ये हो गया कि नो मैटर Compassion. what is empowering and what is compassionate, I will take that decision. क्योंकि रिचा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मीत 100% गलत है. वो अपनी वाइफ को टाइम Hmm. नहीं देता या अपनी वाइफ को उस तरह से नहीं रखता जिस तरह से रखना चाहिए रिचा के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो रिचा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको है ना रोमांटिक होना चाहिए, उसको है ना पता नहीं प्रेजिंग करना चाहिए, उसको लाइवली होना चाहिए, उसको मस्ती फन होना चाहिए, उसको पता नहीं क्या क्या होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट Hmm. ही इज हु ही इज. Compassionate, basically, हाँ, for you. सो मैंने कल जब मैंने पहली बार अपने दिमाग में बस पूरी नहीं हुई हूँ मैं कंपैशनेट, बट आई हैव स्टार्टेड लुकिंग कि हाउ कैन आई बी कंपैशनेट and not coming from Richa's perspective of life. And how can I be empowered in the situation where it's not about है ना. Richa, it's about me and Richa and not just about Richa. हाँ, तो It's what you about are saying, me I'm and the Richa ulta. as a relationship. What you are saying, I'm the ulta of that, right? Not I'm only ulta. thinking No, 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 about, no, for no. example, the other person. No, 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 no. Example, Meet Understand. wants to go for somewhere, then I'm saying हाँ जहाँ भी मीत को जाना है वहीं जाना है. उसको नहीं बात करना है, ठीक है मत बात करो, ये ऐसे ही खुश है. हाँ, उल्टा तो हो गया ना. उल्टा की बात नहीं है. तुम कंपैरिजन में जाओ, तुम तो बस अपने में देखो कि तुम्हें लिमिट कैसे कर रहा है. डू यू फील सफोकेटेड कि तुम्हारी कोई सुनता नहीं है? तुम खुद नहीं सुनती. तुम खुद खुद की को खुद कभी नहीं वैल्यू नहीं सुनती. देती. तुम खुद को कभी प्यार नहीं करती. तुम्हें ऐसा लगता है मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता. तो मनीषका खुद ही हम्म खुद की प्यार नहीं करती, दूसरा इंसान क्या प्यार करेगा? हम्म So you have to see limitations of your center. Every center has positives and negatives. Gaurav ji, can you connect to what I'm saying? Can you see in your life? Yes, little bit, I think. So आपका वर्क आपको कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है वो देखो. How are you drawing your identity from your center? But my work is not restricting me. He is it. Okay, then आपको अभी तक present नहीं है. Let's read ahead. Let's go back to an example we mentioned before. Suppose I'm a parent who deeply loves my children. Suppose I identify that as one of my fundamental values is in my personal statement. But suppose on daily basis I have trouble because I overreact. Visualization and affirmation. I can use my right brain power of visualization to write affirmation that will help me become more congruent with my deeper values in my daily life. A good affirmation has more power than uh, 5 ingredients: personal, positive, visual, present tense, emotional. So I might write something like this: it is deeply satisfying that I respond with
wisdom, love, firmness, and self control when my children misbehave. तो मैंने कल क्या क्रिएट किया? इट इज माई डीपली सेटिस्फाइंग दैट आई रिस्पॉन्ड with empowering context, being empowered, being loved, being cherished, and being compassionate when I feel I am ignored or abandoned, or when I feel I am not given importance to by husband or anybody. Are you understanding? Yeah. Anishka, you can see? Yes. So Gaurav ji, you have to see आप कहाँ restrict होते हो, आप कहाँ ओवर रिएक्ट करते हो, आप कौन सी सिचुएशन में हेल्पलेस फील करते हो, उस सिचुएशन को पकड़ के देखो. वहां पे आप Okay. इमोशनली डिपेंडेंट होगे, जहां पे आप इमोशनली डिपेंडेंट होते हो ना, आप वही रिएक्ट करते हो. Yes. तो आप कहाँ ओवर रिएक्ट करते हो वो देखो. Then I can visualize it. I can spend few minutes each day and totally relax my mind and body. I can think about situations in which my children might misbehave. I can visualize them in rich detail. I can feel the texture of the chair I might be sitting on the floor under my feet, the sweater I am wearing. I can see the dress my daughter has on, the expression on her face. The more clearly and vividly I can imagine the detail, the more deeply I will experience it, the less I will see it as a spectator. Then I see her do something very specific, which normally makes my heart pound and my temper start to flare. But instead of seeing my normal response, I can see myself handle the situation with a lot of love, power, self control, and I have captured it in my affirmation. I can write the program, write the script in harmony with my values, with my personal mission statement. अब आप समझ रहे हो ये कहाँ हो रहा है, जहाँ पे आपका ब्रेक डाउन है, जहाँ पे आपको लगता है यू फील हेल्पलेस, यू फील आउट ऑफ कंट्रोल, यू फील यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड ऑब्जेक्टिवली एंड यू आर इमोशनली रिएक्टिंग. वहां बेसिकली पे आप विजुलाइज पहले से इमोशनल कर लो रिएक्शन और होता है. उसको, हाँ, तो आप उसमें इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे, वो इमोशनली इंडिपेंडेंट आप पहले क्रिएट कर लो खुद को. कैसे करोगे? जैसे मैंने खुद के लिए किया कि आई विल बी एम्पावर्ड नो मैटर व्हाट. If my expectations are not fulfilled, I will not overreact कि तुम इस तरह से कैसे behave कर सकते हो, right? I will come from empowerment, I will come from compassion, I will come from being understanding, being kind. And if I do this day after day, my behavior will change. Instead of living out of scripts given to me by my own parents or society or genetics or my environment, I will be living out of the script I have written from my self-selected value system. अब ये बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मैं रियलाइजेशन हो जस्टिफाई. गया रिचा. हाँ मुझे तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो गया है हाँ, ये मैं ये लास्ट. कह रही हूँ, जैसे अगर आप मेरे सेंटर से मैं पूछूं ना, तो मैं 100% सही हूँ अनुष्का. मेरा सेंटर बोलता है नहीं. अरे नीट 10 दिन की ट्रिप के बाद आया है, इतना तो बनता ही था, वो इतना तो पूछ ही सकता था, इतनी सी बात तो करेगा, इतना तो हालचाल पूछ ही सकता था, ये तो कर ही सकता था, वो तो कर ही सकता था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम 100% राइट इन माई ओन वर्ल्ड एंड माई परसेप्शन. But it's my choice not to come from self-centeredness because it is not empowering me. I feel helpless. I feel like a crybaby. I feel unloved and abandoned and this and that and this and that, and I become a victim because I base my self-worth. I emotionally became self-dependent. I become emotionally dependent on my husband और anybody. मैं हस्बैंड का एग्जांपल ले रही हूँ, पर मतलब ये सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं होता, ये मेरे इन लॉज के साथ भी होता है. मुझे लगता है इन लॉज है, इतना तो उनको मतलब ये ना, ये तो बेसिक है, इतने प्यार से तो रखेंगे, इतना प्यार तो करना ही चाहिए, ये तो बेसिक है, यू नो. वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो गलत होते हैं. वैसे थोड़ी गलत होता है कोई इंसान, सबका अलग अलग नेचर होता है. मैं देख नहीं पाती दूसरे का नेचर, कोई भी नहीं देख पाता. खैर मैं तो ये एक्सरसाइज कर रही हूँ इसलिए मुझे ये इतना भी दिख रहा है, वरना मुझे इतना भी नहीं दिखता. मुझसे ऐसे नॉर्मली बात करोगे तो मैं तो 100% राइट थी, सब गलत थे.
थोड़े दिन पहले तक। हाँ गौरव जी, आप देख पा रहे हो क्या? वेयर डू यू फील हेल्पलेस? So I feel helpless when somebody is upset with me, हम्म and that really troubles me. हम्म So maybe that is the time where I would, overreact हाँ or probably take the wrong decision. हाँ। तो when someone is upset with you, what is the communication that you get inside you? Is maybe something I did wrong, or the person is getting upset with me without any reason, कि मेरा तो गलती था ही नहीं, हम्म या कोई मिसकम्युनिकेशन है या हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग है. हम्म। कंसिडर करो, सेल्फ सेंटर्ड वाला वापस पढ़ लेना, आप भी सेल्फ सेंटर्ड हो मेरे जैसे। ओके. कंसिडर करना, मैंने भी कभी कंसिडर नहीं किया इस चीज को, मुझे लगता ओके. था मैं बहुत गिविंग हूँ, पर जो गिविंग हम्म. इंसान होता है ना वो भी सेल्फ सेंटर्ड होता है। हम्म. जो सेल्फ डेवलपमेंट में होता है ना बहुत ज्यादा, वो भी सेल्फ सेंटर्ड होता है। हम्म. हाँ, ये मतलब वो practical जैसे नहीं है ये। योगीज, दे से ना, योगीज आर द मोस्ट प्रोबेबली सेल्फ सेंटर्ड, सब कुछ हाँ तो छोड़ के। ये, तो गौरव जी लॉजिकल नहीं है, लॉजिक से बियॉन्ड एक्सपीरियंस फॉर्म में आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी इस चीज को। ओके. क्योंकि आप कह रहे हो ना कोई आपसे अपसेट होता है तो आप हेल्पलेस फील करते हो, क्योंकि हाँ. मेरे साथ भी सेम चीज होती है और मुझे कल पता हम्म. चला मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। हम्म. वो भी, so self-centered, your security is constantly changing and shifting. Your judgment criteria are if it feels good, what I want, what I need, what is in it for me. Your view of the world by how decisions, events, and circumstances will affect you. Your ability to act is limited by your own resources without the benefits of interdependency. आप बहुत इजीली इंटरडिपेंडेंट नहीं हो पाते होगे, हम्म. तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो। मतलब इंटरडिपेंडेंट मतलब आप डेलीगेट नहीं कर पाते होगे, आप हेल्प नहीं ले पाते होगे, आप सपोर्ट नहीं ले पाते होगे। इट डजंट कम नेचुरली टू यू टू टेक सपोर्ट। यू आर सेल्फ रिलायंट, तो वो आपको लिमिट करता होगा कहीं ना कहीं। नाउ व्हेन समवन इज अपसेट विद यू, व्हाट इट डज इज आपकी आइडेंटिटी को अटैक होता है। गौरव इज दिस एंड दिस फॉर यू इन योर, हम्म. तो वो हम्म. आइडेंटिटी को अटैक होता है कि वो मुझसे अपसेट हम्म. हो सकता है, भाई गौरव तो इतना अच्छा है। हम्म. मेरे अंदर मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे लिए आई एम वेरी दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, राइट? हम्म. एंड व्हेन आई डोंट गेट लव आई गेट ट्रिगर्ड कि मुझे प्यार कैसे नहीं मिल सकता, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। हम्म. तो मैं उस चीज से ही देख पाती हूँ उस चीज को, मैं ये नहीं देख हम्म. पाती कि मे बी ही इज, यू नो, उसके नेचर में नहीं है, मे बी ही इज डीलिंग विद समथिंग हम्म. इन हिज ओन लाइफ। हम्म. So maybe if the other person is upset with you, is it's not about you, Gaurav. हम्म. The other person is upset because the other person is upset, and you हम्म. will not be able to see why he or she is upset because you are self obsessed. Your way of looking it is about how Gaurav is looking. That self centeredness. अब इसको थोड़ा डीप में देख लेना बाद में, तो आप मिशन ठीक है. स्टेटमेंट बना पाओगे अपना। और जब मिशन स्टेटमेंट बना पाओगे आपको लगेगा अरे वाह, आपको एक, आप खुद की बॉडी में से बाहर निकल के कुछ देख पाओगे। हम्म. I have helped and encouraged my son Sian to use this affirmation process extensively throughout his football career. He started when he played quarterback in high school, and eventually I taught him how to do it on his own. We will try to get him in a very relaxed state of mind through deep breathing and progressive muscle relaxation technique. Then I would help him visualize right in the heat of the toughest situation imaginable. He would imagine big blitz coming at him fast. He had to read blitz and respond. He would imagine giving audibles at the line after reading defenses. He would imagine options that he normally wouldn't do. तो ये बोल रहा है आपकी जो टफ सिचुएशंस है ना लाइफ में, जो आपको, जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको हेल्पलेसनेस फील होती है, उसको आप इमेजिन करो और उसको बार बार इमेजिन करको एज अ थर्ड पर्सन देखो। जब आप उसको देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि वे यू कमिंग फ्रॉम, आपका सेंटर का है। फिर आप उसमें है ना अपना
विजन स्टेटमेंट बनाओ, पर्सनल स्टेटमेंट बनाओ कि हाउ यू वांट गौरव टू शो अप इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस. जैसे मैंने कल बनाया, हाउ आई वांट रिचा टू शो अप without her self-centeredness. Self-centeredness मतलब without Richa's expectation in the relationship. अगर मीत और रिचा यहाँ पर है और रिचा की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, तो उस रिलेशनशिप में मीत का क्या स्टेक है? How is Meet showing up if there is no Richa to judge him? उस चीज को देख पाना is, coming out of your self-centeredness. Are you understanding what I'm saying? Gaurav ji. Yes, yes. So if someone is upset with you, you have to see it's not about someone is upset with the Gaurav or Gaurav's identity or Gaurav Hmm. feeling, oh my God, how Hmm. can someone be upset with me? Hmm. Hmm. You have to get out of your own feelings and emotions and see Hmm. why the other Hmm. person is upset. Hmm. And how can you address if there is no Gaurav in Hmm. that situation? Hmm. इसे बोलता है ईगो को डाइल्यूट करना. Hmm. At one point in his football career, he told me he was constantly getting uptight. As we talked, I realized he was visualizing uptightedness. So we worked on visualization, a relaxation in the middle of big pressure circumstance. We discovered the nature of visualization is very important. If you visualize the wrong thing, you will produce the wrong thing. तो आप जैसे अब विजुलाइज करना कि someone is upset with you, एंड देन आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को विजुअलाइजेशन में चेक करना Hmm. गौरव को क्या फीलिंग हो रही है, Hmm. और फिर ये देखना कि गौरव नहीं है उस सिचुएशन में, तो एज अ प्रिंसिपल आप क्या वैल्यू पकड़ के एक्ट कर सकते हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट सिचुएशन, फिर उस वैल्यू को अपने पर्सनल स्टेटमेंट में उतार लेना, और फिर इमेजिन करना गौरव उस प्रिंसिपल सेंटर्ड से एक्ट कर रहा है एंड ही इज नॉट रिएक्टिंग टू हिज सेंटर्डनेस कि मुझसे अपसेट कैसे हो सकता है या अपसेट कैसे हो सकती है. Are you understanding? Hmm. One of the main things in his research showed that almost all the world-class athletes and other peak performers are visualizers. They see it, they feel it, they experience it before they actually do it. They begin with the end in the mind. So the end in the mind is all about visualization in advance and choosing how to act and be beforehand through the principles and not being centered in one of the small area of life, self-centeredness, relationship, people, this. You can do it in any area of your life, before a performance, a sales presentation, a difficult confrontation, a daily challenge of meeting a goal. See it clearly, vividly, relentlessly, over and over again. Create an internal comfort zone, and then when you get into the situation, it isn't foreign. It doesn't scare you. अब मेरे साथ मैं आपको सेल्फ सेंटर्डनेस का एग्जांपल बताऊं. अब राहुल सर ने हायरिंग के लिए बोल दिया, राइट? अब हायरिंग में मैंने 50 रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके 10 का इंटरव्यू लेके 2 को सिलेक्ट कर लिया. अब वो मेरे को टेंशन हो जाए सुबह से, अरे उसने हाँ नहीं भरा, उसने हाँ नहीं भरा, उसने हाँ नहीं भरा. क्यों? क्योंकि रिचा को अच्छा नहीं लगेगा कि वो वापस से शॉर्टलिस्ट करके वापस से इंटरव्यू ले. सो मैं पूरे दिन एंजाइटी में रही. क्यों? क्योंकि मेरी सेल्फ सेंटर्डनेस रिचा को अच्छा नहीं लगेगा कि वो वापस से शॉर्टलिस्ट करे, वापस से रिज्यूमे देखे, वापस से इंटरव्यू ले. आर यू अंडरस्टैंडिंग ये कितना हर चीज में कितना इम्पैक्ट करता है लाइफ में? गौरव जी एंड अनिष्का जी, Yes. इज इट कम्युनिकेटिंग? कैन यू सी इट इन योर लाइफ? बहुत छोटी छोटी चीजों में Hmm. you will judge how to be, how to act, how to think. Everything comes from your centeredness. Hmm. Your creative, visual, bright brain is one of your most important assets, both in creating your personal mission statement and integrating it into your life. There is an entire body of literature, audio, video tapes, affirmations, and visualizations, neurolinguistic programs, subliminal programming, and other forms of relaxation and self-talk processes that helps you recreate your way of being. My review of success literature brought me into contact with hundreds of books on this subject. Although some made extravagant claims, in effective personal relationship leadership,
Visualization and affirmation techniques emerge naturally out of the foundation of well thought through purposes and principles that became the center of person's life. They are extremely powerful in rescripting and reprogramming and writing deeply committed to purpose and principles into one's heart and mind. Affirmations, visualizations are form of programming. We must be certain that we do not submit ourselves to any programming that is not in harmony with our basic center and that comes from sources centered on money making, self interest or any other correct principles. अब इस बुक से अपन को नया क्या मिला कि विजुअलाइजेशन बोलता है कि विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो, राइट गौरव जी? अपन ने राहुल हम्म सर से भी सीखा, मैजिक बुक में भी, पर उसमें ये सेंटर वाली चीज नहीं बताई. हम्म जब आप विजुलाइज करो सो यू डोंट हैव टू बी हम्म सेल्फ सेंटर्ड कि मुझे हम्म पैसा और चाहिए, मुझे ये प्यार और चाहिए, हम्म ये और चाहिए, मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग और चाहिए. It's saying when you're visualizing, visualize in a way which is principle driven, maybe from compassion, which I created for myself, empathy, kindness, or what is this? Anishka ka honesty, she being honest in a situation, in a difficult situation. The imagination can be used to achieve the feeling success that comes when a person is focused on material gain and when in it, what's in it for me. But I believe the higher use of imagination is in harmony with the use of consciousness to transcend self and create a life of contribution based on unique purpose and on the principles that govern the interdependent reality. बहुत ब्यूटीफुल चीज है. आप समझ रहे हैं? Identifying roles and goals. Of course, the logical and verbal left brain becomes important also as you attempt to capture your right brain images, feelings, and pictures and words of written mission statement. Just as breathing exercises help integrate body and mind, writing is also a neural muscular activity. तो ये बोल रहा है कि आप जो भी करो ना, आप writing के through करना. Writing distills, crystallizes, and clarifies thoughts and helps break the whole into parts. We have a number of different roles in our lives, different areas and capacities in which we have responsibility. One of the major problems that arises when people work to become more effective in life is that they don't think through broadly through. They lose the sense of proportion, the balance, the natural ecological necessary to effective living. You may find that your mission statement will be much more balanced, much more easier to work with if you break it down with specific roles and areas of your life and goals you want to accomplish in each area. Look at your professional role, look at your salesperson, manager. What are you about in that area? What are your values that should guide you? Think about your personal roles, husband, wife, father, mother. What are you about in those roles? What's important to you? Think of the community roles, the political, public, volunteer organization. One executive has used the ideas of roles and goals to create the following mission statement. My mission is to live with integrity and to make a difference in the lives of others. To fulfill this mission, I have charity, to seek out and love all regardless of their situation. I sacrifice, I devote my time, talents, and resources to my mission. I inspire, I teach by example. I am impactful. What I do makes a difference in the lives of others. These roles take priority in achieving my mission. Spouse, my partner is the most important person in my life. Together we contribute to the fruits of harmony, industry, charity, and thrift. Father, I help my children experience progressively greater joy in their lives. Son, I am frequently there and for support and love. Neighbor, scholar, and it goes. Writing your mission in terms of important roles in your life gives you balance and harmony. After you identify various roles, then you can think about long term goals you want to accomplish in each of those roles. An effective goal focuses primarily on results rather than an activity. It identifies where you want to be and in the process helps you determine where you are. Roles and goals give you structure and organized direction to your personal mission. As you move into habit number 3, we will go into greater depth in the area of short-term goals. Family mission statement, ये बना लेना. Organization mission statement, ये भी बना लेना. Gaurav ji, it's clear, right? I don't have to explain much.
इसमें सिर्फ नहीं, एक it is not 100% clear. I will talk to you later about it ठीक है। because I am definitely not self-centered. इसको But you मॉरली know, मॉरली तो मेरे को भी लगता है आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन। मुझे कल से हाँ तक हाँ लगता है आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन। मुझे हाँ, लगता था मुझसे सेल्फलेस पर्सन ही कोई दुनिया में नहीं। हम्म, सेल्फ सेंटर्डनेस डजंट मीन यू आर सेल्फिश, अंडरस्टैंड दैट। हम्म, okay, सेल्फ okay, सेंटर्ड डज नॉट मीन यू आर सेल्फिश एंड एरोगेंट। हम्म, आपको हम्म, गौरव जी, आपको किसी भी एंगल से मुझे देख के लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ या सेल्फ सेंटर्ड हूँ? नहीं, नहीं, नहीं ना। तो सेल्फ सेंटर्ड का no, मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। और okay, आपको ये भी इसलिए हिट कर रहा है क्योंकि आप हम्म, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि गौरव जी सेल्फ सेंटर्ड हम्म, कैसे हो सकते हैं। हम्म, बिकॉज आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो आपके खुद की आइडेंटिटी से आ रही है। हम्म, सी दैट्स हाउ यू सी, दैट्स व्हाई यू नॉट एबल टू टेक इन। आपके देखने का तरीका ही आपके उस सेंटर से आ रही है, विच इज सेल्फ सेंटर्डनेस। okay, दिखा भी आपको दिखा? नहीं, नहीं, अभी जो नहीं बोला दिख, उसको दिखा? नहीं, I'm not too sure. जैसे मैंने Just, आपको बोला just let me आपका, give it. मैंने आपको बोला गौरव जी अपने इमोशन हम्म, से कनेक्ट करो। जब मैंने आपको बोला मेरे को ऐसा लगता है कंसिडर कि आप भी सेल्फ सेंटर्ड हो, हम्म, तो आपको बुरा लगा? नहीं बुरा लगा? थोड़ा सा चुनना सा हाँ लगा, बुरा लगा? हाँ लगा, बुरा लगा मतलब वो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो ना खुद की आइडेंटिटी पे। हम्म, तो आप खुद की आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट हो जब भी तो सेल्फ सेंटर्ड हो। ये बोल okay, रहे हैं बस। okay, अगर मेरे को क्यों, मैं जब फोरम में आई थी, जब मैंने शेयर किया था, व्हेन आई सी हम्म, पीपल आर मीन टू मी, हाउ आर दे मीन टू मी? दे सेड हम्म, दिस एंड दिस, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी तो पूरी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम खराब हो गई। हम्म, किसी हम्म, ने कहा यार रिचा ऐसी है, और मेरी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती है। हम्म, क्यों? क्योंकि मेरा सारा हम्म, वर्थ ही मेरी आइडेंटिटी से आ रही है कि रिचा हम्म, ऐसी है। पर वो कितना लिमिटिंग है, ये कह रही हूं मैं। I cannot be compassionate. If someone said Richa is something like this, okay, maybe. How does it matter? It's not about me. हम्म, Are you understanding? yes, तो अपन को खुद की आइडेंटिटी को छोड़ के अपन को ऊपर से देखना है। और वो हम्म, प्रिंसिपल चूज करो, क्या प्रिंसिपल चूज करोगे? हम्म, आप इस चीज में अटको नहीं वापस कभी। okay, किसी ने कह दिया गौरव सेल्फ सेंटर्ड है, तो आपको इम्पैक्ट नहीं करे इमोशनली, चुन्नी सी नहीं। हम्म, हम्म, चुनना सा इम्पैक्ट इसलिए किया क्योंकि हम्म, आप हो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब आपका सेंटर सेल्फ से आ रहा है, सेल्फ हम्म, आइडेंटिटी से आ रहा है कि हम्म, गौरव अच्छा बंदा है, गौरव ऐसा हम्म, है, गौरव वैसा हम्म, है। हम्म, आई यू अंडरस्टैंडिंग? yes. कोई मुझे 3-4 बार अच्छा कह दे तो मैं तो Take the time to record the impressions you had in the funeral visualization at the beginning of this chapter. Take a few moments and write down your roles as you now see them. Are you satisfied with the mirror image of your life? Set up time to completely separate yourself from daily activities and to begin work on your personal mission statement. The book is saying, Gaurav ji, हम्म, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ ना, वो गौरव की आइडेंटिटी से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड okay, नॉट बी अबाउट हाउ गौरव इज। योर हम्म, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट शुड बी independent of Gaurav's identity. so it should be what Gaurav wants to be. No, it has nothing to do with your wants and needs and desires. That's what Okay, I'm saying. Richa की desire तो बहुत कुछ है। or it should be how how Gaurav wants the world to see him as. No, it should not have Gaurav in the In it. Okay. it should be independent of Gaurav and Gaurav's identity. हम्म, आपका सेंटर जो है ना, वो गौरव की आइडेंटिटी के ऊपर है चारों तरफ। हम्म, आपका देखने का तरीका यही है, मैं ऐसा कुछ करूं कि गौरव की आइडेंटिटी अच्छी हो जाए, हम्म, उससे इंडिपेंडेंट हो। मैंने कल का क्या क्रिएट किया, गॉट प्रेजेंट। रिचा सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, डजंट हम्म, मैटर।
It's about me being compassionate, no matter what. रिचा की लाइफ अच्छी हो बुरी हो, रिचा को अच्छा लगे रिचा को बुरा लगे, independent of feelings and likings, independent of Richa's need, Richa's wants, Richa's desires, Richa's this, Richa's that. Hmm. Same for you. Okay. Then you will be free to act Hmm. because you will not be constrained by your own identity. Richa Hmm. ऐसी, Richa वैसी, गौरव ऐसा, गौरव Hmm. ये, गौरव वो, गौरव ये, गौरव वो. Set up time to completely separate yourself from daily activities and to begin to work on your personal mission statement. आपकी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में गौरव का Hmm. अस्तित्व नहीं होना चाहिए. Hmm. Go through a chart in Appendix A showing different centers and circles, all those you can identify with. Do they form a pattern for behavior in your life? Are you comfortable with the implications of your analysis? Start a collection of notes, quotes, and ideas you may want to use as a resource material in writing your personal mission statement. Identify a project you will be facing in the near future and apply the principle of mental creation. Write down the results you desire and what steps will lead to those results. Share the principles of habit 2 with your family or work group and suggest together to begin the process of developing a family or group mission statement. Anything you want to say, Gaurav, Anishka? We are done with habit number 2. ये लास्ट जो 7 points है, just share this in the I will. group. I will do that. Yeah. So Homework है. yeah. Do that. Okay. और गौरव Hmm. जी आपको ओपनिंग हुई, आहा मूवमेंट हुआ? हाँ. Yes. ये बड़ी 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 पावरफुल बुक है. इसमें मतलब ओ गॉश, वेरी नेक्स्ट लेवल बुक है ये. आप सोच के परे है ये बुक. Okay. ओके, सी यू टुमारो. Okay. See you See tomorrow, you. Richa. Thank you, Bye. Richa. Bye. Bye. Try to be conscious and see yourself from outside, I'm outside. Yes. outside of your own self. Hmm. Thank you. See you. Thank you. Bye.